ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द डे। तो गोल्ड जो फेड है तो अपनी एंट्री थी ना 64 के ऊपर, उसके रनर स्टिल रनिंग है। तो गोल्ड की ये एंट्री थी फ्राइडे को 64 से। तो उसका अपना टीपी था 89 जो हिट हो चुका है। अब रनर चल रहे हैं जो होल्ड कर रहा है। एंट्री अपनी ये थी शायद इस बीच के ऊपर दिस। हाँ, ये एंट्री थी, टीपी का हिट हो चुका है ऑलरेडी। तो समथिंग 300 टिप्स समथिंग, नॉट 300, 270 टिप्स समथिंग अपने हिट हो चुके हैं। अब जो गोल्ड है ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। ये ब्रेकआउट था तो ग्रैब सम टिप्स, बट अभी लाइक टू हाई टू बाय एंड टू बुलिश टू सेल। तो अभी कोई पर्टिकुलर गोल्ड की ट्रेड में तो मैं एंटर नहीं कर रहा। अब बट ईयू या जीयू बहुत सॉलिड लग रहे हैं। अभी इस ट्रेड में एंट्री मत करना, ये जस्ट नॉर्मल आइडिया है। कुछ मेरे पहले के चार्ट मार्क करें स्पॉट पर। बट ये कुछ चैनल्स है जो यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है ईयू के ऊपर। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। अगर ये ट्राई शूट करती है ऊपर तो अपने पास एक रेंज है। बस अपन यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं और सेकंड दिन तुम्हारे पास ये लिक्विडिटी हो। तो ये वाला सीन, बट एक बार देखते हैं इसको। तो अगर ईयू पे चलते हैं तो ईयू फिलहाल इस जोन की यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तुम अगर देखोगे तो अपने पास मल्टीपल टैब है ईयू के। देखो ये रहा जोन, उसके बाद अपने पास एक और रिएक्शन यहाँ से है, एक रिएक्शन ये था। तो ये कुछ हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था दैट माइट कैन नॉट इन दिस। तो अगर ये 4 आवर यहाँ पर कुछ अच्छा सॉलिड बुलिश ग्रोथ होता है जैसे अभी थी कैंडल, तो एक्सपेक्ट करो कि नेक्स्ट कैंडल माइट शूट अप ना 40-50 फीवर में मिल सकती है अराउंड 1700 और प्राइस में 1800 एरिया अगेन। तो ईयू का पोटेंशियली एक ट्रेड हो सकता है अभी। एंड ईयू में प्राइस इसके ऊपर 2 आवर इसके ऊपर क्लोज अगर अपन यहाँ इंटर करें करंट प्राइस पे तो ज़्यादा बड़ा ऐसे जाएगा तो नहीं, हार्डली 15 का ऐसा है। और ये अगर यहाँ से ट्राई करते हैं अपन करंट प्राइस से तो 20 का ऐसा है, टारगेट 40 ही तो 1 to 2 है। तो ईयू ट्राई कर सकते हैं अपन अभी बाई के लिए। एंड देन ओवरऑल टी पे अपन थोड़ा ये हाई रखेंगे। तो मैं ईयू में एंटर कर रहा हूँ। फिर आते हैं अपन जीयू के ऊपर। जीयू के अंदर भी सिमिलर स्ट्रक्चर चल रही है। लेट गो टू 4 आवर। इफ यू लुक एट दिस जोन, 4 घंटे के ऊपर जो जोन दिख रहा है अपने को, यहाँ देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक और इंजेक्शन है, थर्ड अगेन रजिस्टेंस कन्वर्ट टू सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस। अगर ये 4 घंटा बुलिश क्लोज होता है तो एक्सपेक्ट नेक्स्ट कैंडल टू शूट अप टुवर्ड्स फिल दिस रेंज अगेन। तो यहाँ पर ये एफईजी अपन कुछ टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अपने पास रेंज है 36 एस एल 20-25 समथिंग एस एल। एंड both EU and GU can move in the similar direction, but सीन वही है कि अपने को एक पेयर के ऊपर डबल एक्सपोज नहीं होना है। तो एक एंट्री ठीक है, तो मैं EU के अंदर इंटर हूँ। तो लेट मी सेंड दिस एंट्री टू द फॉक्स। तो
And let me send this signal to Telegram as well so people won't miss it. And 17. Use this, so you don't need to something 30. And now let's just move on to gold. It's very hard to trade on new all-time high all the time. But अपन रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं तो पोटेंशियल रिट्रेसमेंट एक तो ये हो सकता है कि प्राइस रिट्रेस करे 3698-97 जोन को एंड देन वी कैन एंटर बाय अगेन and we have this the order log right here. And we have some heavy FUG at 71K around 78 area. तो यहाँ से भी potential reaction हो सकता है अगर price something to came down in this zone. देखो लास्ट सपोर्ट यही था अपने पास तो प्राइस बेसिकली इस रेंज के अंदर थी ये था सपोर्ट लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस कैन either reject come down retest 95 area then shoot up or take a deeper pullback around this 78 and daily pivot area and then you can shoot up. तो इस जोन का अगर अपन फिबो लेवल मार्क करते हैं तो व्हाट्स द लो ये 78 सॉरी डेली पिवट एक अच्छा जोन है बाई करने के लिए अगर प्राइस इतना रिट्रेसमेंट लेती बट देयर इज अ चांस कि अपने पास इतना रिट्रेसमेंट नहीं हो क्योंकि आज भी अच्छी न्यूज़ तो है नहीं अच्छी या न्यूज़ ही नहीं है आज कोई तीन maybe some FMC member William speaks and then some couple of members also speaking later in the night. Then कल अपने पास PMI है तीन वीक है वैसे कुछ खास है नहीं इस वीक अच्छा some PMI होनी है
एंड pivot ओके अपने पास अपने पास डेली एंड वीकली pivot इस एरिया के ऊपर है, तो ये 73 74 75 एरिया, इट्स अ नाइस जोन दैट प्राइस इधर ट्रेस करती है। सो इधर है डेली pivot, थर्टी सेवन हंड्रेड है 15 मिनट ऑटो ब्लॉक के बायस 3700। ना ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे को कुछ लॉजिकल लग नहीं रहा यहाँ पे। बट एक एक सिनारियो ये है कि अगर देखो प्राइस अगर इस एरिया पर आती है ना 3700 3695 के ऊपर, तो सेम थिंग, सपोज कि ये कैंडल कुछ ऐसे आती है बेरिश कैंडल, एंड देन नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जो भी एक्शन है इधर 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक और 95 एरिया, नेक्स्ट कैंडल बुलिश प्रिंट होती है तो फिर वहाँ से एंट्री ले सकता है, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ कुछ एंट्री ट्राई करने की नीड नहीं है, यू कैन ट्राई बट सेम एसएल बहुत नीचे आएगा। अगर अपन एडीआर भी चेक करें तो नेक्स्ट एडीआर है प्राइस टाइम टू 75%, सो पोटेंशियली 3729 का है टारगेट। अगर इस एरिया के अंदर तुम एसएल लोगे तो एसएल का फिक्स नहीं है, एसएल लास्ट लो पे 89 के ऊपर ही आएगा। तो इस टू बिग ऑफ एन एसएल टू एंटर, तो सेफ बेट यही है कि तुम वेट करो इस प्राइस का 98 के एरिया में आके रिजेक्शन लेने का, उसके बाद अपने पास एक पोटेंशियल एंट्री हो सकती है। एंड द सेफर एंट्री इज अराउंड डेली पिवट लेवल। यहाँ पर डेली पिवट है, वीकली पिवट भी है, सम मल्टीपल एफपीजी 70 के 36 के 30 के 1 आवर प्लस सीवो लेवल, तो ये अच्छा लेवल है एक स्विंग बाय करने के लिए, तो समथिंग लाइक दिस। आई थिंक वाइट वाज बेटर। ओके, ये करंटली यूएसडी की एंट्री है, तो इस पर मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। Hold on, I have to fetch my headphone. Okay, can you hear me?
Hello, hello. Yes, I can hear you now. Yeah, I can hear you now. Okay, so 1730 there's. I slept very late, finally. Yeah, I saw your text later on, but I was like, okay, there is no need to be very tight this time. No, yeah, I was waiting for that entry to come, but it never came. But gold just went without me, apparently. It's fine. Are you holding the runners? What? Yeah, small runners I'm holding till the payout date, which is in next 2 days. So I think I'll close it tomorrow. Okay, nice. What happened with me was I took a TP of You 89 kept a TP. and then it got hit and I was like, okay, damn. I thought you would have kept a TP of 707.5. Like that's This the this last high. high, right? I Yeah. targeted these, these candles basically. So these were initial plan was this one, but somehow I target this for support level. Something around this here. And when we no, there's a reason I put TP over here at 89. 89, I don't see the exact reason why No, no, you no, put see. 89, but Oh no, no, we have the chart, bro. Let me see. okay. See, so I was on 15 minutes and that was the TP, 78. See, targeting this Okay, fair green enough. zone. That was my TP level. This was. Yes. So this was the TP on the Friday trade. And then the morning we do have some gap up, market open with a gap up, then price came down, tapped this gap again and then shoot up. So we can't do much on that. So right I now, actually thought you would you close the full position because on Friday night you did mention that you close a full Friday position. yeah, I was confused. in one of the round, but then one account I had running. So Nice. I for some position running on one account from 3360, Let me see. Hold on. I thought you said 3360. Yes. 3359 I had a position Okay, running okay. on board. Oh, 3360, I know which account it is. Practically, you should not have that entry. Yeah. Yeah, I know that. I know that. I know which account you're We talking know about. 3640. But Friday was nice. Like last week, only Friday gave us some nice move, and now we just need to get a retracement. And see, I already Yeah, explained to the folks, but we do have a nice retracement zone. If you go on 1 hour and turn on the pivots, 1 hour, we do have a weekly bro. pivot, daily pivot. Manoj, Yeah, Manoj, what did I send you yesterday night? This is the same entry which I've sent you yesterday night. yeah, but I didn't check it now. I just check it right now. So we have I've sent you the same entry, like multiple confirmation, 70K confirmation. FAC. So this we can swing again. If it And price, there is, yeah, and there's a EF 1 hour 50 EMA also, daily pivot, weekly pivot, retest to the last support. hold on. It's a very good zone to buy 30K FPG also, right about that. What So happened to the I basically planned Mhm. two entries. The one is that 1 hour order block, and one is a 30K FEG. Okay, let Apparently, me both did not get activated. okay, give it some time. It's just Monday, man. Price Monday activators. No, I So know. I don't mind actually. I'll just hold the trade. this ADR working fine these days. That is 75, then we have 100 and 120. 75 percentage. I saw that actually. 75% ADI worked very nicely. And what do you think about the gap? Yeah, might get finished soon. See, this will get people, isn't it? Yeah, Uh, yeah, we have 200 EMA as well on daily pivot. So that's a nice on that. I want price to come up. So this video 200 EMA right here, weekly, daily, couple of FEG. I think it's a good John. See, with that's 30. yeah. That, So even if you look at this on hourly, so 30 FEG, 50 MA, and if you 1 hour, we have 200 EMA over here, plus order block, hourly, then this, we might get some trouble over here or this
79, 71K FEG. It might react from this, and this is a nice support zone as well. 71K FEG on which time frame you're talking Two, about? 2 hours. Okay, fine. Okay, yes. Yeah, that's it. Close this one. Oh, I thought I didn't mark it down again. Yesterday night, like I was awake for most of the Asian session, and I was expecting a retracement, a small retracement, at least to the level which I thought it will come down. And I saw that okay, 1 hour closed above the support. I was thinking, should I take a trade? Should I take a trade? But even if I would have taken a trade, it would have hit my SL because my uh, maybe not actually 30, 85. I would have put my SL. So this is the next That's very week. Let me mark it down. So trade number 15. EOS on Monday. We started on 22nd. Let me buy. What time? 13 maybe. And I will base on. just to confirm. EU buy is still in our entry area, right? Yes. So thing you see, VIX is kind of dropping to the downside. If we look at this, we do have some sort of rejection over here from this large zone. If VIX came down towards pivot level, that might give us 1 to 1. I'll be fine by now. And if we drop below it, then we're also good. And if I mark some sort of channel over here, we do have a breakout. If it comes down to maybe daily or weekly pivot, that will give us a needed push to EU and G. Yes. Both kind of struggling right now to come up, but it's not a big of an hassle. We'll wait for the volume. Yeah, Yeah. we'll wait for the volume to come in. Maybe NYSE would give us the trade. I did find some indicator last time. And if you look at the, well, we first look at the EU part, right? So if we have bullish divergence on RSI, then MACD also bullish. See, buyers are trying to take control, going above this median line, about 20. Trend is strong, sellers are coming down, volume is good. I think you can shoot up. Yeah. Yeah. And then uh, Goldie, so Goldie, I'm not touching right now. Uh, Again, the same line, to buy, to buy. Yeah. Same thing, don't go for any random order block. There are multiple order blocks, just go for at least two things. Yeah. So if you lose, at least you can blame on at least 2, 3 people. प्रत्येक प्रॉफिट लेके भी दर्द ऐसे लेके भी दर्द प्रत्येक यार मेरी ट्रेड 89 पे क्लोज होगी ना आई शुड बी रनिंग मोर ना 150 विद मोर तो थोड़ा स्ट्रगल है and give me 1 second.
डीटीसी का क्या चल रहा है? मैंने सुना कोई लिक्विडेशन हुआ था वीकेंड के ऊपर। Yeah, somebody अरे don't know, but like, it, नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। से yeah, ये जो ट्रेड थी ना, कब की थी मेरे को आइडिया नहीं है। कोई चैनल वैनल था जिनकी में अपन इसमें स्टॉप आउट हो गए हैं। नॉट, लेट्स जस्ट नॉट गो इन दोज डिटेल्स। I think बट we will have an opportunity to buy again. भैया लिक्विडेशन कैसे है बीटीसी? मोस्ट ऑफ लोग, अच्छा ये यहाँ से शूट मारा और देन ड्रॉप हुआ। अगर ये ऐसे भी हो सकता है, और देखिए चैनल है, दिस चैनल गॉट ब्रोकन राइट नाउ, और ये कुछ ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली बीटीसी इधर भी आ सकता है फिर से। एंड देखते हैं यार, बीटीसी अपन इस वीक एक और पेयर ऐड करते हैं। मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ कुछ पेयर की। एंड व्हाट Okay. एल्स वी हैव? यूजे यहाँ चला, जीने हो गया स्टेटस है जी। जीने भी कुछ हैवी ड्रॉप हुआ है। अच्छा अच्छा, ये Yes. फ्राइडे No. फ्राइडे हुआ था वो जेपीआई इंटरेस्ट रेट के Right. चक्कर में, एंड देन आज कुछ हुआ नहीं है। आज हुआ कुछ, इसने नो स्वीप किया प्राइस ने, अपन ने मिस किया इसको। The price swept the lows and made a joke. अगर दीजिए एंट्री तो ये एंट्री हो सकती है दीजिएगा, बट यहाँ से बस सेम कंडीशन है ना। वी स्वीप द लिक्विडिटी, प्राइस शिफ्टिंग स्ट्रक्चर, we tap to this FEG, Yeah. and then we go and target this high. And even Asian B was nice, you know, the movement of Australia open, it sweep the yesterday high. नहीं सॉरी, ये तो आज ही हुआ था यार। सो फ्रैंकफर्ट टेक आउट द हाइज। अबे जीएम अच्छे हुआ है डीजे के अंदर। सी फ्रैंकफर्ट टेक आउट द हाइज एंड देन टेक आउट द लोज, एंड देन इट माइट गोज एंड टेक आउट द हाइज। तो ऐसा Yes. हो सकता है यार। ईयू की ट्रेड के अंदर ये है कि ना, ये तुम्हें क्या बोलते हैं, ये टॉर्चर करेगा भी, है ना। It will move slowly, slowly. Did you enter on the EU EU? is the only. Yeah, yeah, I did enter on the EU. I was just reconfirmed and asked you, no, is it still in our Uh, entry? GU के अंदर भी सेम एंट्री है पोटेंशियली, But बट yeah, but yeah, it's over risking, right? don't overexpose on and same pair twice. Like EU G basically know the Yes. same. It can also go and fill this with like लगता है ये हो सकता है potentially. And gold 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 is waiting for retracement. gold is not tradable Yeah. right now. To be honest, मेरी कोई इच्छा नहीं है वो टाइम आएगी तो गोल्ड बाय करने की, आज नहीं ट्रेस। तो जब तक वो नहीं मिल रहा देन Even me. अपन बाय करने के फेवर है, तब तक EU is doing fine. So let's stick to EU. एंड मैंने मेरी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा बहुत ही स्मॉल वर्ड्स के अंदर, है ना। ये जो है ना, 95, इसको फिक्स करने का Yeah. प्लान था वीकेंड पे, बट आई गॉट बिजी इन समथिंग एल्स। Okay. इसको फिक्स कर। ठीक है, गोल्ड का देख सकते हैं यार, लग देख सकते लेकिन इंसान इस कहीं पे कुछ वो नहीं है। Which one? गोल्ड गोल्ड Yeah. RSI is over, I am putting as RSI is overbought RSL. basically. Overbought trend is strong again on gold. Yeah, बस trend is strong again. ओनली कंसर्न तो डाइवर्जेंस चल रहा होगा ना RSI 90 पर दैट इज
Well, we should be concerned a bit about that. ठीक है, but basically it's तो देखा ना लास्ट बार भी ये सीन था ओल्ड का. तो यहाँ पे गोल्ड का डाइवर्जेंस का सीन हुआ था जैसे कौन then gold should end up slightly. देखते हैं भाई gold is too bullish. So let's just focus on the euro and after some minutes, high profit of Yeah. two ticks. Yeah. इसका टारगेट 1 to 1 है 1 to 1 20 pips है ना close some position over there बस. Yes. Volume out of nowhere. 70-20 is expected, I think. Okay, again what happened out of nowhere some DXY is dropping. See this candle, if this keep on happening then we'll be fine. And I think gold is also got some new push. Yeah, it did. Did It's it's not a big thing, but did somebody open his mouth again? I can't see nothing. Do we have something on? Why do we have that thing in the financial juice? financial juice. What is that? Uh, No, nothing. Defense Minister of Beijing gold rupees, nothing. here was my 200 pips again. No, 300 pips, man. Oh, now I feel more bad. I thought I went only 200 pips. See? Yeah. Are we running 600 pips again? Yeah. I can just tell you how much whips you are running. Simple 500 pips from class and mana. What else you need 550 pips? Easiest entry. As in, hold it. That's it. Yeah, when we start last year, Yeah. gold was something 2700, 2600. Then expected था कि I do year end पे remember. gold 4000 पे चला जाएगा. But April तक we are Yes. like gold is going from 3200 to 3400. उसके बाद सबने उम्मीद छोड़ दी भी gold ऊपर नहीं जाएगा. April till August. Starting Yeah. के 3-4 महीने push था, then we have some retracement period. But बाकी plan ये था ना कि we should buy gold every day for 0.01. I would be running 0.01, 10,000 pips by now. But yes. but see ये ना कि We are not, we didn't count that. we are not doing that. ये ड्रॉ डाउन फेज अपन ने काउंट नहीं किया, ये कंसोलिडेशन फेज ना ये वाला से. So there's 1, 2, 3, Yes. 4 months यहाँ तक कुछ हुआ नहीं गोल्ड के अंदर and then suddenly uh, I think it started from, I know from March, April to June or July. नहीं ये भी इसकी बात नहीं कर रहा सर, ये तो अब शूट हुआ, इसकी बात कर रहा हूँ सर, ये वाला जो
ये जो अभी आया है ना पुश, ये पुश तो लेटेस्ट स्टार्ट ही अगस्त एंड के अंदर और सितंबर के अंदर हुआ, इसी मंथ तो स्टार्ट हुआ है। बट Yeah, ये जो this is fine actually. हाँ Like I was planning on swing trading on like from May onwards, like the 0.01 lot देखो ये from था, ये लास्ट ईयर में, not May actually, April. Yeah. लास्ट ईयर दिसंबर अपन यहाँ थे 2500 बेसिकली है ना, 24 दिसंबर, ये 31 दिसंबर आए, वी आर 2600. So from there to that time, we are running almost over 10,000 pips. If somebody do it, Yes. they swing trading on that. है ना? Right now, फिर ये जो फेज था ना, इनिशियली शूट आ गया, इट वेंट टू 31 एंड देन केम टू 21. देन ये जो शूट था ना 34 से लेके 31 का, यहाँ पे जो खराब है ना 4-5 महीने, जो रेंजिंग पार्ट है, एंड देन वी हैव एक्सपेंशन इन, एंड दिस एक्सपेंशन नाउ लिटरली वर्ल्ड टेक 4,000. I think so it will tap. The Okay. way gold is moving right now, I won't be surprised. Hey. Okay, guys, EU shooting up nicely. We have 10 pips and I need 10 more pips so Okay. we can lock some Take position. partial. Yes. Okay, now I'm feeling good. I'm gonna change the image now. Okay, which image I put? For I haven't put image on EU. Okay, oh man. Okay, first we need to mark down entries. So it was a breakout and we enter on the flip and breakout. Here's XC confirmation. Then I'll breakout on both. And give me the image right here. Oh, the trade I committed on 2 hours basically. Maybe you can go on hours and we do a nice breakout. And I finally find a monitor which I'm going to order. I did some Which uh, which which R&D. is it? So this is the one I'll order. This I check couple of maybe in AOC. I check couple in MSI. So between MSI and this one, I did some comparison. I think this is the much better. MSI did have some, you can say some more dark, but this is much better for our use. So right now we can. Yeah, because just because there's a battlefield photo does not mean that it will be perfect for battlefield. But it might be because so it have a high refresh rate and SDR 400. They have only SDR 10 something, and I think this will be fine for us. So I can stream in 1440 there. I see bit of color That issues. sounds good actually. I can see on the stream, so that is the reason. And this will be much better for us, streaming wise as well. And both Flipkart and Amazon same price, and then as a Prime member, I get it very early compared to Flipkart. Flipkart delivered to on 27. I'm getting this on 24th. Okay. And then one was this one, something MSI, DNB. This is 1920 now. Please, yeah, this one. This is 2K. Okay. Yes. With this, I can easily fetch something maybe 150 FPS on Battlefield.
I think you should go for the other one. Better not to change your decision. Keep it simple. Okay, well, that's it. I'm going to that. Done. Final. No discussion on Yeah. that part, but that's it. And almost TP about to hit on you. Yes. Would you be holding this trade for a longer time? Yeah, I'll load some position, then I'll leave some for sure. Okay. गोल्ड ऐसा हो चुका है रोज उल्टा उल्टा माई प्रिंट हो रहा है Remember last year, this same time frame actually. Last हाँ year around the same time, gold was doing the same thing. Every day there was an all-time high. अब इस एरिया पे क्या होता है कि भाई तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई गोल्ड में एंटर कर जाओ ठीक है ना भाई कोई चल रहा है ऊपर तो जाहिर है अपन इंटरव्यू नहीं है ठीक है बट सीन ये है कि एक कोई भी लॉजिकल एंट्री के लिए ना एक तो फिर एक वो फालतू का अननेसेसरी लॉस लग जाएगा काम करने को बन जाए इसमें कोई वो इशू नहीं है बट एक फालतू का स्प्लैश आ गया यहाँ से कोई एडीआर फिर एक्शन लेके पता नहीं फिर जैसे कुछ ऐसा Yeah. ऐसा हुआ था एक फालतू स्प्लैश आ गया नीचे अपन फिर उसमें लपेट जाएंगे अननेसेसरी लॉस नहीं देना बंदे को तो लेट्स ईयू चल रहा है अच्छा कोई दिक्कत नहीं ईयू के अंदर एंड जीयू आल्सो शूटिंग है बट जीयू के अंदर सॉरी जीयू है ना ये जीयू के अंदर भी सेम एंट्री थी बट फिर ईयू जीयू में से एक एंट्री ठीक है नॉट ओवर एक्सपोजिंग I might have another entry coming up very soon in gold, but I'm just waiting for a closure at 37.20. गोल्ड भाई लिटरली देखो इफ यू गो हाई टाइम के ऊपर तो ऐसे बहुत बड़े हैं बट अगर तुम्हें यहाँ एंटर करना है तो भाई मे बी दिस इज ए ब्रेकआउट स्लाइड ब्रेकआउट नॉट बिग ऑफ दैट तो इफ यू वांट टू ट्रेड गोल्ड ओवर हियर Not exactly. No, it's all. और यू वांट That's very odd. यू वांट सेल बेस्ड ऑन Situation. एडीआर I would be selling based on ADR. Of course, I would be selling based on ADR. Like I have two entries at 100 and 125. 29 point 29.5. Yeah, 29.5 and 41.2. I was just scalping maximum 22, like 20 to 50 pips maybe. In between that range, I will capture something and then I'll close the trade. ओके भाई 14 pips so far I have 12 pips. और अभी भाई वो टाइम आ चुका है मेरे को कोई इसके अंदर ऐसे अब ये कैंडल दोबारा फ्लिप होने का कोई रीज़न बनता नहीं है तो आपने भी कोई रीज़न नहीं लगता कि इतना बड़ा असर रखे ठीक है तो एक काम मतलब लेके नहीं कर देगी को कैंसिल डन सो लेट मी अपडेट ऑन टेलीग्राम फर्स्ट Break even the entry or break even the trade actually. ये एसएल टू एंट्री SL to entry. Yeah. You taking partials as well?
no. पार्सल 70 के ऊपर है, इवन 68 ऑलमोस्ट टैप हो ही गया था ये। ये था ना, ये रिजेक्ट हो गया 676, so less than a pip. Yeah. But why would I take an SL at this point? You know? So I might be risk free and I could shoot up, I'm fine. If it doesn't, I'm also fine. तो इसके अंदर भी हाफ क्लोज करेंगे ना, तो यू कैन डू द क्लोजिंग पार्ट, बट इतना कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है। Yeah. एटलीस्ट मैं ये हाई स्वीप के बाद आई आई वुड लाइक टू क्लोज टीपीओ में ना, तो एक बार थोड़ा और वेट कर लेते हैं, हार्डली 550 डिफरेंस है। ये हाई स्वीप करने के बाद वी कैन क्लोज सम, देन लेट इन स्टॉप मोर देन दिस। यार वो अदर पेयर ऐड करने के ऊपर ना मेरे को जीजे ऐड नहीं करना यार, कुछ और ऐड कर सकते हैं, बट जीजे इसके ऊपर ठीक लग रहा है ना। दिस जोन इज क्लीन, ये वाला जोन है अपना लेफ्ट क्लीन है। एंड अपने पास ज़्यादा Yeah. तो रेंज नहीं है, बट ये 44 की रेंज है, तो अगर वी कैन फेट सम 20-30 बिट इन दिस रेंज दैट विल बी फाइन। विजय क्या बोल रहा है, माई ईयू ट्रेड इज रनिंग। हाँ भाई, ईयू ट्रेड चल रही है ना अभी, बट एसएल तो एंट्री पे आ चुका है। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने अपडेट नहीं करी स्पोर्ट। Okay, goal you don't want to stop. Finally. Come on. I need a closure about 20 to buy actually. A small retracement. Will buy. Okay, I clear charts and goldie. So by logically we will be breaking on EU in case if price take our entry. We followed our plan, yes. Yes. We know SL to entry and everything's fine, yes. Look at this 4 hours. If let me
If this 4 hour close like this, we do have a, but this is a nice, nice reaction area. We have resistance that turn into support, again resistance, it become a support. If this 4 hour close like this, we can literally go towards fill this wick area and even further than that. Okay. Yes. So Yes. if that happens, we do have a nice range. So I'll leave some runner on this. So this is G, sorry, but logic is the same on both pair. So if this can even happen on G, and if you come to EU, we do also see we do have this nice range. We have a couple of reactions from this area, price reacting up and down, support resistance, a couple of rejection from this again. Then we do a breakout, price might can retest. If this 4 hour look close like this, this bullish candle, then you can expect the next candle might go toward the retest this zone 29 or at least this low of this supported 1792. तो स्टिल अपने पास रेंज है इवन 38 to 10 अगर फिर से अगर इंटर लेनी है तो देन वी आर 1 to 2 ट्रेड बट करंट ट्रेड वी आर ऑलमोस्ट रनिंग 1 to 2 1 to 1 सॉरी तो उसका टारगेट अपना 1 to 2 है 94 तक तो उसके बाद वी कैन क्लोज सम पोजीशन एंड देन लीव सम रनर Yes. Makes sense. Nice. सिंपल ट्रेडिंग what are the probabilities we not take ASL this week what are they I don't want to say anything on that. I have no comments on this. so this my selected tab TP1 so I can move to win 68 68 right so yes update TP1 is 68 let me update I think I give TP to 70 something 77, 78 or something like that. on Telegram I change yes Okay. 1.78 Golden 1.768 SW. Okay. मैंने बोला don't add GJ BTC and silver सिल्वर भी तो Posted ओल्ड सिल्वर भी तो ओल्ड टाइम हाई चल रहा होगा ना अभी Don't add GJ, BTC, and silver, please. Okay. अरे हाँ सिल्वर से याद है विजय So, विजय पहला कह रहा है कि सिल्वर पे आना I है was about to say on Vijay's special request, we will add silver. ये अच्छा रहा है लाइक ये वजह से बाहर हो चुके थे यार है ना XAG. आज से अर्जेंटीना Argentina. अर्जेंटीना केमिस्ट्री क्लास actually goal is RM I Yeah, guess RM Argentina I remember these things I and don't. I was never studious person too. कभी कभी लगता नहीं है कि वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा था वो पुलिस के टाइम पे वो पता नहीं अब काम क्या आ रहा है we draw some random lines on charts and make money है ना Oh, I'll put a alert actually. Today is 22nd. Okay. 22, 23, 24 is Wednesday, 24, 25, Wednesday, Thursday. Fine.
I think I'll buy another account very soon on the next way out. 200 or 100? Stick to 100, man. 200 is too much. 200. But even the most sweet spot of buying account is 50K. If you blast it one, you don't feel like you Yeah, haven't it is lost much. actually. But You won't feel, uh, but you will get the same amount you want to get uh, from 100K also, and you can actually. easily handle one lot in gold, But if you go for Yeah, 100K and you exactly. blast it, you are in a hole of 500. 200K is bigger than that. 200K, how much is gold? Maybe 800, I guess. 800. And if you go to Yes. 10%, then it goes to maybe 1,000, Mm, 1,200 Some something. people, yeah, some people do give give for 1,000 euros. That's what. Like even the two-step comes for 1,000 euros. That's a Yeah. that's another trauma to go through. Yeah, no, like for 1,000 bucks, you can, like 50K, you can get at least 4 accounts. 4 account, if you pass Yeah. you even one payouts and you are good to go. But on 200K, you blast one, dude, you're done. You're like, okay, damn. What decided? And the often even don't like the guy who take bigger payout. After some time, they'll find some reason to not to give a payout. uh, So let's just stay in Not the to give a payout. Yeah. sweet spot of 2, 3, 4% of payout, and that And is then that is fine. be But, under be under the radars uh, to earn more. but the moment you try to go 50K account, I'll try to take 20K payout. They'll find every tiny reason, okay, इस बंदे को payout क्यों नहीं देनी है ना? तो अरे and even if you do the same thing, even you have some one trade that goes above the risk limit, 1%, they'll find, okay, you broke our rules, some unhidden rules. कि तुमने 1% के ऊपर risk किया, then they find that thing. तो इससे better है slow and steady, 2-3 account रखो, make आराम से 2-4% make payout लो. 5%. Yeah, Make 5-10%, 5-10%. done. Take it out. सबसे बड़ा deal वही है. Easy life. और then उसमें easy ना, like तुम 5% payout target कर लो हर account से every month, like 2.5, 2-3% every 2 weeks. ठीक है, you have get 5 to Yeah. 6%. वो 6% से build your broker account, जो भी तुम्हारा personal account है, उसको build up कर लो, और then you are fine. है ना? Yeah. Otherwise, एक दिन तुम्हारा कुछ बड़ी payout के चक्कर में you like, okay, this is the payout I need, और funding company बोला बेटा payout नहीं दे पाएंगे तुम्हें, ये तुमने कुछ किया ना. You have done that, so bro, sorry, bro, no payout for you. बोले बोले एक बंदे को इतना पैसा हम नहीं देंगे. अभी तो यार कुछ रेयरली कुछ सांस थी पहले, देन आई सी सम गाय टेकिंग 50-60 के payout. अभी रेयरली देखता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल द हाई एंड गाइस जो ट्रे दे आर स्टक एट अराउंड 20-25 के, इसके ऊपर नहीं जा रहा कोई भी, इवन हम 200 के अकाउंट है ना. 200K account, that is not even a very big deal actually. Like 20, हाँ 25 is like 10% maybe. हाँ 10%, क्योंकि इवन अगर तुम वो अकाउंट परचेज करते हो ना, डिफॉल्ट वन, आई थिंक फंडेड नेक्स्ट ऑल्सो गिव सम 15% बोनस इन द स्टार्ट, तुम्हारा प्रॉफिट बोनस. तो 4,000 Yeah. they'll send you in the start, तुम 4,000 तुम्हें वैसे मिल जाएगा. All you have to make 3% now, so that's a 10K payout. ऐसा. Okay, boys, we have TP1 hit 10. अबे कहाँ बकवास कर रहे थे? TP1 hit उसका अपने याद नहीं था. Okay, लो pass it. So Yeah, my alert has not been hit. see, I get tapped to 1.17, 1768. So 18 pips you tapped, and then somehow we haven't get the alert. So I'm closing 60% and leaving the rest. We are already breaking. Okay. So this is a win trade, and we got 18 pips. Okay. Okay, now this is a legit TP win.
The only way right now is this. I'll update intro. So there. You do not have an image for the rest of the For the previous world, trades? because there's a small 20 skeptical trade most of the time, but gold shoot up a load, man. Like, what can I do? So I only mark, see, we have 64 entry. We only got 270, I got TP8. But if we haven't put a TP8, maybe we'd be running around 600 almost. Yes, almost. Yeah. ओके ब्रो, मेरे को लगता नहीं है कि ओवर गोल्ड के अंदर भी ट्रेड मिलेगी तो अपन उसको लेंगे, वैसे भी इट विल बी टू लेट। तो आई थिंक इट्स द टाइम टू एंड द स्ट्रीम। Yes. उसके बाद अपन लंदन में मिलते हैं, सॉरी एशियन में, सॉरी एनवाई के अंदर ही यार। पर थोड़ा लेट हो गया था यार आज तू स्ट्रीम स्टार्ट करने के अंदर, है ना। Even me, I was very late today. I आई was प्लान टू like, स्टार्ट एट 11:30, 11:30 पे स्टार्ट होके एक ट्रेड अपन जो कर सकते थे मोस्ट प्रोबेबली वो ये वाली थी, दैट ब्रेकआउट ट्रेड, है ना। yeah, बट इस ब्रेकआउट ट्रेड में वो एक ही कन्फ्यूजन था, लास्ट बार था, मैं लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेक आउट होकर नीचे आ गया था, तो फिर वो मेरा इस चक्कर में प्लान हुआ नहीं, बता, तो ये ट्रेड हो सकती थी 3705 100 vessel, now you get 100 pips, but again we don't want to take a trade on all time high, तो that is, we know that part। और अभी अपना TP1 हिट हो चुका है, रनर में भी क्लोजिंग मोर मैन, आई एम लीविंग ओनली, I'm closing 80%, so 0.4 I'm closing the others. That's it. okay. If the shoots up, we are good, otherwise ठीक है। ओके गाइस, तो रचित और हाँ ग्रेट कर रहे हैं, अच्छा भाई, अच्छी है, तूने लिया ना, बस मंडे की शुरुआत ठीक है अपनी। तो भाई लोगों को मिलते हैं फिर अपन एनवाई के अंदर, है ना।